So this is the Poco X6 Pro, the very famous smartphone which everyone has been asking me to review, and finally we have the review here. I'm going to be reviewing this new smartphone for you and tell you all details about it, and we'll check out if it's worth buying or not. This is Shruti Sharma और इस बार का गजब गैजेट है Poco X6 Pro. So let's start with the design first. Let me tell you, the design of the smartphone is very classy, and something that's very nice about this phone. You know, when I first saw it, was actually very impressive to see it. The camera module that you see at the back is the usual Poco camera module, but even then, when I saw it first, it looked very breezy to me. कुछ कलर एक तो बहुत खूबसूरत है, बहुत क्लासी है, कुछ तो अलग लगा मुझे स्मार्टफोन में जो बहुत ही अच्छा जो है इम्प्रेशन दे रहा है. Talking about the front, well, it has a flat display, which is a good thing. I'm personally a fan of a flat display, so that's about the design. Well, this is a polycarbonate back at the back, and even the frame here is of polycarbonate. The front has the Corning Gorilla Glass 5, and talking about the weight of the phone, that's the reason it's a little lighter than the usual smartphones that you get in the market, which is about 190 grams, and pretty slim, very handy to hold in hand. So overall the design is pretty good, and ये देखिए कुछ अलग दिख रहा है आपको स्मार्टफोन में, है कुछ अच्छा है. ऐसा कलर भी मैंने शायद स्मार्टफोन में आज तक देखा नहीं है, तो दिस कलर इज ऑल्सो प्रीटी न्यू वन एंड वेरी इम्प्रेसिव. इनफैक्ट मेरी ड्रेस के साथ भी मैच कर. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्प्ले. So like display, if you talk about the display, yes, the display is flat and pretty good, and let me tell you that the bezel are very minimal. The OEM has actually reduced the bezels, which gives it a very good output. If you see anything on this smartphone, be it text or even videos, everything looks very amazing. और जहाँ bezels कम हो जाते हैं, display मुझे वैसे ही बहुत बेहतरीन लगता है. तो everything is from edge to edge, very nice display. Display के जो specification है उस पर आप ये नज़र डाल लीजिए. This is 6.67 screen size, AMOLED display है with 120 Hz of refresh rate and 1800 nits of brightness. It does come with a Dolby Vision, and yes, this looks pretty good. It has dual speakers, so yes, that's again a good thing in terms of sound quality as well. Now lots to talk about. Let's go on to the connectivity quickly. आपको एक connectivity का run through दे देते हैं. ये देखिए सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. The connectivity, that it's a 5G smartphone, dual 4G VoLTE, and Wi-Fi 6 is what it works on. Also, the Bluetooth 5.4 is there for connectivity, and it does have the NFC in it. So there was no voice call drop, or there was no network issue as such. So overall, the connectivity was pretty decent. And now the battery, well, 5000 mAh is the battery that you get in this one, with about 67 watts of turbo charging. So quite a bit of charging. So if the phone is at 0%, वो 100% charge होने के लिए लगभग 40 minutes, 40 minutes लेता है. तो 0 to 100 is about 40 minutes of charging, which is pretty decent. And talking about the battery backup, well, I kept using the smartphone for long, say 1 day and a half that it lasted. उसके बाद भी 15% ऑफ बैटरी जो थी वो बची हुई थी. तो बैटरी बैकअप भी एक तरह से अच्छा है. एग्जॉस्टिव यूजेज पे मैं बोल रही हूँ, मॉडरेट यूजेज पे ये शायद आपको 2 दिन का बैकअप भी दे देगा. And now let's move on to the cameras of the smartphone. Well, this is the camera configuration. Let me just tell you on the screen that you see it's a 64 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, and 2 megapixel macro camera. So the lenses that are given here are pretty apt. एक अल्ट्रा वाइड दिया है, एक मेन दिया है, एक मैक्रो दिया है, तो तीनों जो काम है आपके एक ही स्मार्टफोन पे हो जाते हैं. सो दैट्स अ गुड थिंग. फ्रंट जो है वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, और ये कुछ photographs हैं that we've taken. You be own judge and see how are they. I'm going to be telling you a little all about the pictures, but you also have a first-hand experience of how the pictures look that are taken from the Poco X6 Pro. ये देख सकते हैं, the pictures are very sharp and accurate colors that you get on the pictures. The detailing is very amazing, very good detailing. And if you talk about portrait जो हमने लिए हैं इससे, the portrait shots are very decent. Blur जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है, तो overall portrait also performs very well. लो लाइट में कुछ हमने लिए हैं पिक्चर्स जो ज़्यादा ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, थोड़ा सा नॉइजी लगे हमें, और मैक्रो शॉट्स में भी अच्छे जो कि आनी चाहिए आउटपुट वैसी ही आई है. सेल्फी वॉज डिसेंट अगेन, और जो वीडियो है दैट वॉज 4K at 30 frames per second. वील शो यू अ वीडियो हियर एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द वीडियो ऑल्सो फ्रेज at 4K 30 FPS. So now one of the best thing about the Poco X Pro is the performance of this phone. One of the fantastic phones that I experienced till now this year is the Poco X6 Pro in terms of performance. Let me first tell you the pricing. It comes in 2 variants,
8GB and 256GB, which is priced at about 26,999, and the other model is 12GB with 512GB of internal storage that comes for about 29,999. So those are the prices of the two models that you get in this. Again, storage we told you. Now talking about the processor, the Dimensity 8300 Ultra is what is given here, and the powerful chipset performs very, very well. There was no lag, breezy multitasking, and in terms of giving the gaming experience, it was very, very good. And overall, if I say so, the performance has been breezy and very, very fantastic on the X6 Pro. So इस price category में ये performance जो मिल रही है प्रोसेसर की बहुत ही fantastic है. Unless and until अगर Snapdragon 8 Gen 2 ले आए इस price category में कोई और स्मार्टफोन तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक का this is one of the best performance smartphone with this processor in this price category. No doubts about it. So well, फिंगरप्रिंट तो थोड़े आते हैं इस फ़ोन पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं ये वाला वेरिएंट. इट कम्स इन ग्रे जो मेरे पास है, ब्लैक एंड द पोको येलो, दैट येलो थिंगी विच हैज़ अ लेदर काइंड ऑफ बैक. वो भी एक वेरिएंट है जो आपको इस पे मिलेगा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अब वर्डिक्ट यही, खरीदना चाहिए या नहीं? बिल्कुल खरीदना चाहिए. विद द प्राइस दैट इट हैज़, इट्स एक्चुअली वर्थ द मनी. इनफैक्ट जिस तरह के स्पेक्स दिए गए हैं और जो कीमत रखी गई है एकदम बराबर है. बताएं आपको ग्रेट परफॉर्मेंस चाहिए एक फ़ोन से, कैमराज अच्छे हैं, डिसेंट परफॉर्म करते हैं और बैटरी बहुत ही बेहतरीन हो, ये सब तीनों चीज़ें जो हैं उसमें ये बिल्कुल लेवल अप होता है फ़ोन. तो ये तीन चीज़ें इस प्राइस कैटेगरी में इज़ वन ऑफ द बेस्ट. एंड येस, इट हैज़ 3 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट, 4 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स, बहुत कुछ दिया गया है. और साथ में इसमें जो सॉफ्टवेयर की बात करें तो पहली बार आपको Xiaomi Hyper OS भी दिया गया है Android 14 पे, आउट ऑफ द बॉक्स, दैट रन्स वेरी वेरी स्मूथली. जो भी आप टास्क करेंगे बहुत ईजी है, UI बहुत फ्रेंडली है यूज़ करने में और आपको बहुत मज़ा आएगा. सो द एक्सपीरियंस ऑल्सो ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ वेरी वेरी नाइस. सो ओवरऑल everything seems to be pretty good on this smartphone. The pricing like we told you is about 26,999, but अगर ऑफर्स कुछ मिल रहे हैं उसके साथ आपको और सस्ता ही मिल सकता है. तो स्पेक्स के मुकाबले, डिज़ाइन के मुकाबले जो पैसे मांगे जा रहे हैं बिल्कुल सही मांगे जा रहे हैं. खरीद रहे हैं एक फ़ोन लगभग 25,000 रुपये तक के लिए तो ये ज़रूर आप कंसिडर करें. इट्स अ गुड डील, ट्रस्ट मी. सो ये था पूरा रिव्यू पोको X6 Pro के बारे में. एनीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट दिस स्मार्टफोन स्पेसिफिकली, डू राइट इनटू कमेंट सेक्शन और यू कुड फॉलो माय इंस्टा हैंडल आल्सो एंड आई विल रिप्लाई एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू सी इन टेक्नोलॉजी सेक्शन, डू लेट मी नो. दिस इज योर होस्ट श्रुति साइनिंग ऑफ.